अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
संकल्प से बस आपके गुणगान हो। स्वप्न में भी तन का कोई भान ना अभिमान हो, भान ना अभिमान हो। लोकहित का ध्यान हो, कल्याण में चिंतन करें, आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। हम करें निष्काम सेवा, आपके होकर रहें। मन वचन और कर्म अपने सेवा में तत्पर रहें, सेवा में तत्पर रहें। दिल के दर्पण से सभी नित आपका दर्शन करें, आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम प्रेम। ओम प्रेम। ओम प्रेम। ओम प्रेम। ओम आनंद। ओम आनंद। ओम आनंद। ओम आनंद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाबा के साथ हम बच्चों का अविनाशी संबंध, That is the imperishable relationship with Baba. अविनाशी प्राप्ति, That is unlimited attainment दृढ़ प्रतिज्ञा, and firm determination, promise. ये तीनों सदा ही साथ हैं When all three are along with us, तो कोई परीक्षा, किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट, then no test, किसी भी प्रकार no की exam, माया का वार no attack आपको हार नहीं खिला सकता। from Maya can defeat us. बाबा की, बाप दादा की श्रीमत Bab Dada Srimad और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले
And those who follow Brahma Baba कदम at each and every step, कदमों की कमाई करने वाले those who earn an income पास with of multi-million at each and every step, those who pass with honors, फॉलो करने वाले कभी फेल नहीं होते, those who follow never fail. पास with ऑनर होते हैं. They pass with honors. परंतु प्रतिज्ञा सिर्फ उत्साह उमंग पर बेस्ड नहीं, But the promise should not be based on zeal and enthusiasm, but on faith and determination. बाबा ने कहा Baba said, आज की मुरली के अनुसार, according to today's Murli, के अनुसार according to the song सिर हथेली पर लेके आए, I have taken, तो क्या सिर काट के हथेली पर लाए. ये सॉन्ग में तो फिल्म सॉन्ग है, taken the head तो मतलब ये है कि on the palm of my hand. It's not the cutting of the head or the throat, but बाबा आप भी हथेली पर स्वर्ग लेकर के आए हो. because you, Baba, you also take heaven on the palm of your hands, on our palm. हाथ पकड़ We, अपने को we keep your hand in our hand प्रतिज्ञा कर. and we make promise to follow your Srimad. Means we bow down, we respect. Bringing the head on the hands means ज्ञान और to विश्व respect कल्याण समाया हुआ है. your Srimad and to follow your Srimad. हम आप के साथ ये वायदा करते हैं कि हम गृहस्थी होते भी ट्रस्टी बन के रहेंगे. We promise you that while being a अपने householder, समर्पण और ट्रस्टी का we पाठ become सीखिए. a trustee. We play the part of both being a householder फायदा ये and being a trustee. कि अभी The benefit बाबा in this is that Baba himself इंश्योरेंस मैग्नेट बन at this present time becomes the insurance magnate. इंश्योर करता है जो भी समर्पण करते हैं. Those who surrender themselves, Baba insures them. बड़ा अनलिमिटेड प्राप्ति होती है. There is unlimited, multi-million-fold attainment. परंतु उसके लिए समर्पण कर दिया, अर्पण हो गए, You have surrendered yourself. You have sacrificed everything, offered everything. करते रहे. क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी एक जन्म की नहीं, इसका फल जन्म जन्मांतर अथवा पूरा कल्प चलता है. This insurance goes for जो every समर्पण kalp, जमा करते हैं for birth after birth. ब्याज बहुत मिलता है. You receive the interest of that for जो a long time. पूंजी है वो तो मिलती है, You do receive the income, ब्याज but the interest also पूरा कल्प चलता है. throughout the whole cycle, the whole kalpa. जो बाबा की शिक्षा में इंटरेस्ट रखते Those who have interest in Baba's teachings उमंग and से, with great zeal and enthusiasm, हिम्मत से और निश्चय से श्रीमत का पालन. those who have interest, so that they receive the interest afterwards. 10 तारीख की मुरली सुनते हैं. Murli of the 10th of June. ओम शांति. Om मीठे Shanti. बच्चे, Three children, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है. the directions of both Shiv Baba and Brahma Baba दोनों की are मत पर चल very well known. अपना कल्याण करना है. Follow the directions of both and benefit yourselves. Question is, वन ट्रस्टी कौन है? who is the number one trustee and how? उत्तर है शिव Answer बाबा है is- नंबर वन ट्रस्टी. Shiv Baba is the number one trustee. उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं है. He isn't attached to anything at all. इसी मार्ग में तुम उनके अर्थ On the path of devotion, भी दान पुण्य करते हो, whatever donations you वो make सब इंश्योर हो जाता and charity you perform in His name, है. भक्ति में उसका they are insured for you. में भक्ति मार्ग में And you receive
the fruit of those दूसरे जन्म में in your next birth. अभी जो बाप अर्थ करते हैं, सब कुछ इंश्योर करते हैं, उसका पूरा रिटर्न बाप देता है। Father gives you the full return of whatever you insure now in the name of the Father, because Baba says, भोगता नहीं हूँ, I don't experience happiness as such myself. So what would I do with anything I took from you? The song is, having taken an oath, I have come to your doorstep. ओम शांति। Om Shanti. मीठे मीठे सिक्खे लदे बच्चों ने गीत सुना। You sweetest, beloved, long lost and now found children heard the song. बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। You children are those who belong to the Father. समझाया है ये अंतिम मर जीवा जन्म है। Father has explained that this is your last birth जीते जी बाप का बनना है। in which you die alive. ये तो बच्चे जानते हैं। Belong to the Father while alive. श्रीमत गाई हुई है। You children understand that Srimad has been remembered. मनोवाच्य। Srimad are the versions of God. में श्री कृष्ण का In the Gita, they have mentioned Shri Krishna's name, है शिव बाबा। whereas it is really Shri Baba's. उनके बाद ब्रह्मा, After him there is Brahma, श्री कृष्ण। and then Shri Krishna. श्रीमत श्री कृष्ण की नहीं है। Shri Krishna. Srimad is not said to be from Shri Krishna. श्री कृष्ण की, Our Father क्योंकि श्रेष्ठ is the most हमारा elevated of all. शिव बाप है। पतित पावन श्री कृष्ण अथवा राधे आदि को Neither Radhe or Shri Krishna can be called the purifier. पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, बाबा कहते हैं वो देवता हैं, They are human beings दैवी गुण वाले with मनुष्य हैं। divine virtues. मनुष्य को कभी पतित पावन Human beings cannot be called the purifier. सतयुग में तो पुकारेंगे भी नहीं। In the golden age, you would not say, कहेंगे पति purifier come. पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है Only the one Father purifies the impure. जो पावन बनाता है। तुम पावन कैसे बनते हो? How do you become pure? शिव बाबा की श्री And it is his Srimad that you follow by following his Srimad. प्रजापिता ब्रह्मा की भी मत मशहूर है। The directions of Prajapita Brahma मशहूर है। are also very well known. Srimad too is very well known. शिव बाबा आकर के Shri Baba comes तुमको अपना बनाते। and makes you belong to him. गीत में कहते हैं सिर हथेली पर रख के आए हैं, सिर हथेली पर रख के बाप के बने हैं। क्या Some of you say, having taken an oath, हजूर I now belong to the Father. तो सिर फौरन श्रीमत को प्रैक्टिकल में बुद्धि में धारण करेंगे। To follow. सिर काट के हथेली पर थोड़ी It's not a question of cutting the head and putting it बाबा ने on the कहा palm. वो फौरन means बुद्धि में स्वीकार करेंगे। To follow Baba's Srimad immediately. अर्थात उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े। Therefore, you have to follow his direction. शिव बाबा तुमको बाबा को मत अपनी मत देने की दरकार नहीं है। There is no need for you to give the Father your own directions. देने वाला है। He himself gives you directions. आप सब बच्चे हैं। All of you are children. शिव बाबा नामी ग्रामी है। Shri Baba is very well known.
वह जो मत देंगे, whatever directions he gives, जो कुछ करेंगे, and whatever he does राइट करेंगे ना, is righteous है, right, सच्चिदानंद है, is the truth, सत्यम शिवम सुंदरम है। is the truth, जो भी करेंगे वो कल्याणकारी होगा, the benevolent one and the beautiful one. श्रेष्ठ बनाने वाला, So whatever directions he gives and whatever he does is right. इस ब्रह्मा को भी He even शिव बाबा दे gives direction to Brahma. कि ये करो, Do this. तुम्हारा कनेक्शन ही शिव बाबा से, Your connection is with Shiva Baba. तुमको फिर कौन सा डायरेक्शन मिले, Which directions you receive? पहला डायरेक्शन है First कोई direction is कभी अवगुण नहीं देखना don't look है, at the defects of others. गुणग्राही बनना है। Become one होली हंस का picks टाइटल मिला है, others' virtues. Follow Srimad. सब गुण संपन्न का मतलब ये 36 गुणों की 56 गुणों की लिस्ट की बात नहीं है। Full of all the virtues, all virtuous ग्रहण means करते रहो। go on picking अवगुण देखते भी others' सोचो इसका virtues रिजल्ट क्या है। while seeing the defect. अवगुण वाले को Think about what would be महिमा मिलती है, the result if you see the सम्मान defect. मिलता है। तो मालूम है अवगुण का कीड़ा कैसे पीड़ा देता है, तो Seeing the defects देख के किस bring the germs, the virus. नहीं लो, अवगुण देखना माना बीमारी ले लेना। To see the defects means श्रीमत पर चलना है। to take the illness. शिव बाबा Baba says, follow Srimad. Shiva Baba is का incorporeal. तो नहीं है ना, निराकार तो का घर तो परम धाम। This is not his home आप here. पुराने घर में रहते हो, You are living in an old home, and then in heaven घर में रहे। you will live in your own home. शिव बाबा कहते हैं Shiv मैं Baba नहीं says, आऊंगा, I will not live there. नहीं आऊंगा। I will not come in मैं heaven. तो इस समय I थोड़ी come देर here के लिए आता for a short while. At this time, हूं। नेक्स्ट पॉइंट है, next point, तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी। you are the true spiritual salvation army. प्रेम रूह बाप डायरेक्शन The Supreme Spirit means the Father is giving you directions according to the drama plan, exactly as he did in the previous cycle. कलब कलब जो डायरेक्शन देते होंगे, He gives the same directions that he has given every cycle. Day and night, सुनाते रहते he continues to give you this deep knowledge. A new person will not be able to understand it. भल कोई 35-40 वर्ष से रहते हैं, Although some have been living here for 35 to 40 years, परंतु बहुत हैं there are many of them जो इन गंभीर बातों को समझते नहीं। who don't understand the deep, serious matters. बाबा जो रोज समझाते रहते हैं, Baba speaks रोज ही समझाते। new knowledge every day. कराची से मुरली, The Murli has been sent out since the days of Karachi. पहले बाबा मुरली बोल At first, Baba never used to speak a Murli. के नहीं सुनाई थी। रात को ब्रह्मा बाबा 2 बजे उठ जाते, He would wake up at 2 a.m. and write फिर 10, बाबा जो टच करते थे, whatever touching he would receive. पर Baba would write that 10-15 in his notebook. पेज लिखते, He would wake up at 2 a.m. and write 10 to 15 pages. 15 पेज मीन्स हमारे इसके 3-4 पेज।
बाबा लिखवाते थे, Baba would make him write. शिव बाबा, Shiv Baba would make Brahma Baba write. फिर उसकी कॉपी And copies were then made, निकाल। carbon copies. भक्ति On the path of devotion, मार्ग में जो शास्त्र आदि के they take कागज care संभालते of the हैं, pages of the scriptures. दिन प्रतिदिन बड़ी Day by किताबें day, बनती जाती they have been making bigger and bigger books. कितने बायोग्राफी बनाते They जाते continue to make so many biographies. शास्त्र भी कितने, हमेशा वो ऋषियों को हाथ से वो मोर पंख लेकर के ऐसे पेपर पर लिखता हुआ दिखाते। प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, There were no printing press. They would write with a प्रिंटिंग प्रेस या peacock कागज feather नहीं था। serving as the pen. वो तो अभी प्रिंटिंग प्रेस तो अभी रिसेंट निकली है। Printing press तो दिन प्रतिदिन came out बड़ी just recently. बनाते जाते हैं, This कितनी बायोग्राफी बनाते जाते, फिर वो पढ़ they study them and keep them in the biographies. चली आती हैं वही पुस्तकें। तुम तो मुरली पढ़ते हैं, क्योंकि रोज मुरली मिलती थी। बाबा कहते थे क्या करोगे, रख के यहाँ रखो, दिल में रखो, दिमाग में रखो, कागज कितने संभाल के रखो। Baba says the Murli, you should keep them in your heart, in your intellect. उस समय सुनी पढ़ी और फेंक दी। Baba says you read each Murli and then throw it away. शुरू में In the beginning, कॉपी के पेपर मिलते थे ना, carbon copy, मुरली मिलती थी। only one Murli was available. वो 25-25 का ग्रुप बना के 25 डाल के carbon copies जरा भी पानी की बूंद न पड़े, would be made हाथ से काट and taken great care of so that तक सारे rain or whatever water, drop of water should not go on it, पूरा हो जाता। would be spoiled. कहाँ रखेंगे? Carbon copies. So Baba says, इसी तरह इतने मजबूत पेपर पर नहीं होते, और Not घर all. बैठे नहीं not as strong paper as nowadays. Paper also would be very delicate type. कहते हैं, नहीं तो बाबा के वर्षन रखने चाहिए। In fact, these versions should be kept तो बुद्धि for all के time. जीवन में But हमेशा no. के लिए रखो। कागज फेंक भी देते हो, In your intellect. तो श्रीमत का पालन करो, बुद्धि से Follow जी हजूर Srimad. उसको Say, स्मरण करो। Ji Huzur, yes my Lord, तो बाबा कहते in हैं, your heart, in your intellect. Baba says, रखने तो चाहिए वर्षन, परंतु नहीं जानते हो ये सब विनाश हो you know that all of them means those papers तुम बनाते हो will be destroyed. करने के लिए, The pictures, etc., सब दब that जाए। you make will remain for a short while only. न शास्त्र, सतयुग में न चित्र आदि कुछ भी नहीं रहते। They will then all be buried. मिल रहा है अभी, No scriptures, no images, etc., चल रहा है, will remain there in the golden age. कल बात And whatever is happening now, it will then take place in the next cycle. वापस से शुरू हो जाएगी। The scriptures, etc., will begin again in the copper age. At first, the Granth, the Sikh scripture, was a small book लिखा हुआ बहुत, written by hand. अभी तो 10 They have now made it bigger. मीराबाई कबीर एडिशन है, साधुओं संतों के भी शब्द, तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, सिर पर उठा के ले जाते हैं। बहुत छोटा था, अभी बड़ा बना है, They continue to make them प्रतिदिन बड़ा bigger बनते जाएंगे। day by day. नहीं तो शिव बाबा की कहानी कितनी लिखनी चाहिए। On the other hand, अभी think about how much of Shiva Baba's life story परमात्मा should be written. का Your children now say that you know the life story of the Supreme Father, the Supreme Soul. बाप बैठ समझाते हैं,
Father sits here and explains भक्ति मार्ग में मैं क्या करता what he does on the path of devotion. इंश्योरेंस करता हूँ I do insurance on the path of devotion. भक्ति में दान पुण्य करते हैं Those who donate on the path of devotion. हो जाता है दूसरे जन्म में दे देता हूँ I insure those things हम तो ऐसे and give them in the next birth. भक्ति मार्ग में हम खेती करते थे On the path of devotion, we जन्म में काट that we लेते थे मिल जाता था इंश्योरेंस do fielding, अभी संगम And युग पर तो हम बाग लगा रहे we हैं do the harvesting. Now, एक बारी नहीं काटते परंतु जन्म जन्मांतर पीढ़ी दर पीढ़ी when we sow the seed here, the gardening, जब आया then we go on eating, harvesting तो एक जन्म का इंश्योरेंस for birth after birth. अभी तो Here, इंश्योरेंस कर there is insurance for one मर birth. गया उसको नहीं मिलता उसके रिश्तेदारों The one who dies here do not receive anything, maybe his का इंश्योरेंस family. And Baba says, समय का भी इंश्योरेंस और ईश्वरीय इंश्योरेंस कितना फर्क है the insurance of today's world and the godly insurance, so much difference between the two. पुण्य करते Baba says, people donate अर्थ करते and perform charity ये मैं in the name of God. मेरे नाम से करते हैं This is why I insure, because they do it on my name. They say this one has donated and performed charity in the name of God. फिर वो नेक्स्ट जन्म में God gave him a birth in a grand home. परमात्मा बहुत होते हैं There are many righteous souls on the path of devotion. ईश्वर अर्थ श्री कृष्ण अर्थ They donate and perform charity करते आए हैं in the name of God फिर तो or बाप Sri Krishna. समझाते हैं Father मैं explains, बच्चों को दूसरे जन्म में फल this is why भक्ति I give मार्ग those में children फल some temporary fruit of that in their तो next कर्मों birth. का फल कहा जाता है उन्हें Good कर्म किया or उसका bad फल fruit मिलता है is definitely needed. तो फिर बाप Good समझाते or हैं, bad fruit is definitely अच्छा व बुरा received. फल तो मिलता है ना Good or bad fruit is अकाउंट definitely में received. कितना इंश्योरेंस How हो, much is insured? कैसा कर्म किया Whatever actions each one performs, he जैसा accordingly कर्म किया receives the fruit of उस those. अनुसार फल मिलता है फिर कर्म में माया इन्फ्लुएंस करती है Maya makes you perform wrong बुरा काम actions करा देती है which bring you sorrow, जिससे दुख को प्राप्त होते हैं अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ I am now जो कभी teaching you दुख such नहीं actions होगा। that you will never और experience sorrow. माया भी वहाँ नहीं होती Even Maya will not exist there, तुम्हारे कर्म में इंटरफियर करे so that यहाँ Maya तो would बाप interfere किया, in your अच्छा कर्म actions. किया, सेवा की किस बात में उसका जो है वो कर्म विकर्म बन गया किस बात के कारण वो दान तो किया पर अहंकार भर गया Yeah, you do donate, but you have अभिमान आ the गया ego, the arrogance इच्छा हो along. गई That is desire to have संकल्प name ये मैं and fame. करता हूँ इसका फल मुझे मिले There is the desire तो that वो I, कर्म whatever I बुरा do, कर्म किया I should receive the इच्छा fruit of नहीं that. रखते, पर अच्छा नहीं किया जैसा बीज बोया वैसे फल मिलेगा भक्ति में भी कहते हैं बोया पेड़ बबूल का कांटों का पेड़ लगाया If you sow the seed आम फखाना of thorn and you want to eat mango बोया fruit, पेड़ बबूल का आम उस पर आम कैसे लगेगा how would mango fruit come from the seed of ये the thorn अभी tree? भी अगर Baba says मैंपन अभिमान दिखावा that is show off. impression, That is ego, arrogance, the माया, need to impress. These are subtle forms of Maya. गया तो कर्म
No matter whether we perform some good actions, then that action becomes a sinful action. तो बाबा कहते हैं Baba says, बाकी वहाँ तो माया होती नहीं, Maya will not exist there. मर्तबे की बात हो जाती है। Then it is a question of status, according to how much each of you उसमें मिलता तो ensures. सुख का ही फल है, परंतु पोजीशन का अंतर पड़ जाता You all do receive the fruit, but it is a question of your नौकर चाकर status, your position, according to how much each of you ensures. Shri Baba, अभी वहाँ तो माया होती नहीं, बाकी है मर्तबा। ट्रस्टी होके रहे, उसमें वो गृहस्थी नहीं बन गए, मेरा वेले में नहीं हो you do not become a householder in that, saying that this is yours. You surrender everything कल में in a practical way. अनुभव कर सकते हैं कि You can experience that, किया या नहीं किया। whether you have surrendered or not. तो शिव बाबा तो ट्रस्टी है, Shri Baba is also वन the trustee. ट्रस्टी है, He is the number one trustee. दूसरे दान देके Other trustees आसक्ति would be attached to things. से मैंने लगवाए, I put this curtain. जो सजावट हुई है ना, ये मैंने दी है, I gave the decoration. These are all the desires, मैंने दी है। the furniture. कोई गाड़ी ला तो सके उसको थोड़ा इधर उधर। आसक्ति, माया आसक्ति है, क्योंकि मेरा है, दे के मेरा रखे। When you keep the desires after doing something, Maya comes. नंबर वन ट्रस्टी, जो देने के बाद अनासक्त रहे, प्यारा रहे। Number one trustee is the one who, after donating, कोई ट्रस्टी remain without any desire. खराब कर Some trustees would even ruin everything for others. बाप तो देखो कैसा ट्रस्टी, Look what kind of कहते हैं look what kind of trustee the Father is. He says, all of this is for you children. है, उसको ही बिगाड़ देते हैं। खाना खराब कर देना मतलब प्रॉब्लम करना, और अच्छे काम Ruining something means to spoil everything. कैसा ट्रस्टी है, कहते हैं सब कुछ बच्चों को Look what kind of trustee the Father is. He says, all of this is for you children. Your connection is fully with Shri Baba. Father says, I am the true trustee. He says, I do not take that happiness myself. I give the whole kingdom to you children. A worldly father also gives everything to his children as their inheritance. कुछ भी नहीं, I don't take anything in heaven. I give you everything. तुम्हारा Your total connection is with Shri Baba. ये ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया, This Baba also says, Brahma Baba, I too have fully insured myself. The body, mind, and wealth are all used for the Father's service. दाता रूप There is a saying in Sindhi, those whose hands are like this means bestowing pose will reap the first harvest. हाथ जिंदा ऐसे ऐसे पहले पहुंचेंगे, ये है सब इंश्योर करना, Ensure everything with the Father. मेरा नहीं है, इंश्योर है, Make sure it is not mine. वो सब इंश्योर। It is for the Father. दो मुट्ठी चावल When Sudama gave 2 handfuls of rice, he received a palace in return. को Look, मकान बना, someone sent 1 rupee for the building at Mandavavan. एक That was just built and said,
one mother was there. She was very poor. पर बेचने का काम करती She used to do the business of papad, 10 रुपया कमाती थी इतना ही rolling papad. मिलता था उस समय तो 10 रुपया भी बहुत है महीने घर चलाती थी उसी से She would receive 10 rupees and would run the home with that amount all the days. Baba says, look, someone sent 1 rupee for the building that was just built and said, मेरी एक ईंट put a brick in it in my name. 1 rupee, 1 brick at that time. कोई कहे हाँ मैं 1 रुपया भेज देता हूँ मेरी अभी ईंट लग जाए तो बाप ने उनको लिखा Father wrote back saying, उनको तो you will receive महल मिलेंगे the best palaces. ऑनेस्टी से You will receive the best palace of all गरीब हो because you are poor. तुम गरीब हो मैं हूँ ही गरीब निवास I am the Lord of the poor. किताब है गरीब का 1 rupee of a poor person is equivalent to 10,000 of a wealthy person. दोनों का एक ही मर्तबा में Both receive the same status. शाहूकार बहुत मुश्किल से देते Hardly any wealthy ones come here. Kumaris are the most free of all. अम्मा गई Look how Mama became number 1. She did not have anything. She came के फादर from a poor family. Mama's father left the body. माँ के घर में रहती माँ अपने भाई के पास रहती The mother would go to her brother's place. She came from a poor family, and yet she claimed number 1. This one gave everything, and yet it is always Lakshmi first and then Narayan. इतना वंडरफुल खेल है This is such a wonderful play. जो भी करती थी ज्ञान धन देती थी वो Amma नहीं हो कम चला would give the wealth का भान of knowledge. नहीं है कहा बाबा ने ये Whatever Baba would say, she would put that instantly in practice. इतना वंडरफुल खेल है लक्ष्मी पहले नारायण पीछे तो कभी भी किसी बात में Never let there be any doubt about anything. कम थोड़ा ही Bab Dada is no less. भी संशय इसमें Don't have the slightest doubt in this one. मीठा बनना है Also become very sweet. कदम पर श्री Take Srimad at every step. नहीं तो Otherwise, नुकसान Maya will make you incur a great loss. देने पर So many directions have to be given to the children. पूरा सब Baba says, write all your news. संभाल Baba will look after you in every way. ख्याल रहता है Baba is very concerned that कंसर्न रहता है ये बच्चा this child should rise high. उसके लिए पढ़ाई Full attention needs to be paid to the study. हम हैं मोस्ट बिलवेड गॉड We are the most beloved godfatherly students. रहना चाहिए Should have this intoxication. लिखा हुआ है The phrase, कृष्ण the versions of God, has been written, कृष्ण but they have put in Sri Krishna's name. Sri Krishna is the highest of all human beings. कृष्ण का नाम He is the first prince. They mention Sri Krishna's name, but why not Sri Narayan's? श्री कृष्ण बालक है Sri Krishna is a child. बेपन से बालक A child is Satopradhan in his childhood. युवा फिर वृद्धावस्था Then comes adolescence, and then there is old age. Krishna. Children are praised because they are pure. Children are like those who have the knowledge of the Brahm element. तो श्री कृष्ण भी छोटा बच्चा Children don't commit sin उसका बर्थडे मना because Sri Krishna is a young child. His birthday is also celebrated. Nevertheless,
They have shown Shri Krishna in the Copper Age. Father sits here and explains all of this. Apart from you Brahmins, there is no one else in the world who understands all of these things. Brahmins are the most elevated. You Brahmins are the children of God. देवताओं से भी उत्तम हो। सतयुग में In the golden age, you won't be called the children of God. ईश्वरी तो जरूर स्वर्ग। You will definitely receive heaven from God. अभी बाबा ने स्वर्ग के लायक बनाया है। Baba is making you worthy to go to heaven. अति Baba says, this birth is your extremely valuable, rare one. नहीं हो सकता। It cannot be that for everyone. ऐसा बना The drama is predestined in this way. Those who studied this in the previous cycle or studying it now, God भगवान भगवान definitely created gods and goddesses, परंतु टाइटल भगवान but they cannot be called gods and goddesses. गॉड God is one. निराकार बाप That is praise of the incorporeal. की थोड़ी महिमा होती There cannot be praise of corporeal ones. है। The निराकार incorporeal one made Lakshmi Narayan become like that. They are now studying Raj Yoga. A kingdom was established, but destruction also took place at that time. बाप तो जरूर Father definitely gives the inheritance of heaven. इस संगम युग की बात It is now a matter of the confluence age. समय मिलती है। शिव बाबा When Shiv Baba comes, तब the play comes to an end, and then जिनका जन्म होता Shri Krishna takes birth. है। मनुष्य तो बेचारे बहुत Poor, helpless people are confused, तब तो बाप and this is why Father comes and explains. परम पिता परमात्मा Supreme Father, the Supreme Soul, सब शास्त्र tells you का the सार essence of all the scriptures through Brahma. जैसे It is as though you become master knowledgeful at this time. आत्मा की महिमा है। There is praise of the soul. का सागर He is the ocean of knowledge, the ocean of bliss, the blissful one. This is the praise of the Father. कहते हैं Father says, ये भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु श्री कृष्ण this का Bharat नाम डालने is the greatest pilgrimage place of all. से ही गुम कर However, by putting in Sri Krishna's name, they have made all of Shiv's praise disappear. Otherwise, everyone offers flowers at the Shiv temple. बाबा जो प्रारब्ध देते The best of salvation for all is that one. से आते You experience the reward for half a cycle and then you descend. प्रधान बनना ही Everyone has to become Tamopradhan. Father says, मैं तुम बच्चे I am now establishing नई the new world for you children. मैं खुद नहीं आता He himself does not come in heaven. बच्चों के लिए Everything is for you children. This is very clear. निष्कामी हूँ, मेरी कोई कामना नहीं है। मनुष्य तो अपने लिए करते People do everything for themselves, but then say that they are doing everything in an altruistic way. काम काम No one can do anything altruistically. काम हो सकता है। You definitely receive the fruit of everything you do. इसका I give you children the imperishable jewels of this knowledge. मैं तुमको तुम बच्चों को I give you children the imperishable jewels of this knowledge. और तुम्हारे लिए वैकुंठ लाया। I have brought paradise for you. बच्चों को सॉवरेंटी का सॉवरन देते बना देते I give you children the souvenir बना देते। of sovereignty. अब ऐसा लायक बनना Therefore, you have to become worthy of claiming that. का मालिक बनना है। You are becoming the masters of heaven. You are given paradise on the palms of your hands. श्रीमत You receive liberation in it. वही सुख मिलेगा। You receive liberation in life in a second. That is सेकंड में जीवन the kingdom in a second. दिव्य दृष्टि दाता Shiv Baba
is the bestower of divine vision. He takes you to paradise in a second. बाबा के It isn't that Baba is holding a key in his hand. चाबी नहीं है, Brahma Baba is not holding the key. शिव बाबा के पास है चाबी। It is Shiva Baba who gives the key बच्चों को for bestowing divine vision. Baba says, मेरा I give you children the kingdom. I don't rule there. Then, when you go onto the path of devotion, I have to entertain you with divine vision. कितना अच्छी रीति He explains so well. ऐसा बाबा Such a Baba कलप only comes once at the confluence edge of every cycle. वारी आते हैं, सारे कलप बनी बनाई बन रही है। The created, predestined drama is taking place. Nothing can be changed now. Whatever happens in the drama, it is fixed. साक्षी हो के See all of it as detached observers. Make Baba your गहराई बुद्धि companion, Sati. Detached observers, Sakshi. Baba explains to you very well. बाबा कहते हैं बच्चे Children, मैं तुम्हारा I am इंश्योरेंस मैग्नेट हूँ, your insurance magnate. टोटल ट्रस्टी हूँ, तुम्हारी एक पाई भी नहीं। I don't waste even one penny of yours. कौड़ी से तुमको हीरे I change you from shells into diamonds. जब शिव बाबा करते हैं Shiva Baba does all of this through this one, through Brahma. द्वारा सब कुछ सफल ब्रह्मा के द्वारा कराते हैं। करण He uses everything in a worthwhile way through Brahma. Baba says, He is Karan Karavanhar. He is the incorporeal and the egoless one. कैसे बैठ के पढ़ाते हैं, Look how God the Father sits here and teaches you. He doesn't ask you to fall at His feet. Father is your obedient servant. बाप कहते हैं Father says, जिनको मालिक बनाया Those whom I made into the masters experienced happiness and are now experiencing sorrow. धर्म बदली हो गए, सुख भी बहुत मिलता है, You receive a lot of happiness. कोई और धर्म No other religion has that much happiness. ऐसे नहीं कह सकते कि You cannot ask, को क्यों, why do the people of Bharat receive it? औरों को क्यों नहीं, What crime have others committed? शुरू में और क्यों नहीं आए, और ड्रामा में अरे सारे इकट्ठे थोड़े ही आएंगे। Baba says, oh, but there are फिर मनुष्य so many human beings. Not all of them can go to heaven. बना हुआ है, This drama is predestined. तन देवी देवता There was the original eternal deity religion in Bharat. सहज राज God came and taught easy Raj Yoga. कहते हैं, Father says, फिर से आए I have come once again. भी जानते हो, You also know that जन्मों का पार्ट बजाए you have played your parts of 84 births हैं घर, and that you now have to return home. पुराना चोला भी पुराना हो This costume has become very old. का मिसाल। Means the example of a snake. नेक्स्ट पॉइंट, Next point. संन्यास Sannyasis say शरीर that each soul is the Supreme Soul कह देते हैं आत्मा परमात्मा में ली, and therefore merges into Him. ऐसा आत्मा शरीर छोड़ देंगे, आत्मा परमात्मा में लीन हो गए। ऐसी अवस्था में रहते शरीर छोड़ते They then leave their bodies in such a stage. नहीं हो, However, no one can merge into the Brahm element. वो तो धाम है रहने की जगह, In that too, उसमें ये संन्यास some are very clever. बैठ के They sit down peacefully and just leave their bodies. होशियार होते हैं, अटके होते हैं, तो शरीर छोड़ते हैं तो उनका वायु When they do that, 2-3 दिन means leaving their body, रहता है, there is dead silence in the atmosphere for 2 to 3 days. तुम जानते हो You know that. ये पुराना You are going to shed your old bodies हम बाबा and go to Baba. ब्रह्म तो बाबा नहीं, The Brahm element is not Baba. घर है, That is just an illusion. कोई
that those poor helpless people have, भ्रम है that the soul will be merged in the Brahm element, which they consider to be God. लोक भी लाइट है, लाइट का धाम है, आत्मा भी लाइट है। अभी मानो देखो मैं मिसाल The Brahm element is light, the soul also is light. हुआ है, The sun rises. चार मोमबत्तियां छत पर जला, You may put 1,000 candles on the roof. आपको बत्तियां नजर आएंगी? Would you be able to see the candle light? They have all been merged नहीं है, in the sunshine. लाइट में समा गई। तो ब्रह्मलोक में बाबा की लाइट, In- ब्रह्मधाम की लाइट और ये आत्मा की लाइट, It is same here, there. वो तो साक्षात Baba's light and the light of the soul. तो ब्रह्म है। It means appears to be merged, but actually it is not just like the 1,000 candles in front of the sunlight. अच्छा मीठे मीठे शिकिनदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा की मुख्य सार, Essence or inculcation. First point, see every scene of this drama as a detached observer, क्योंकि बनी बनाई because that which is predestined is taking place. कभी भी किसी बात में Don't have doubt उठाना। about anything. दूसरी बात, Second point, बाप इंश्योरेंस, Father is the insurance magnate. इसीलिए Therefore, तन मन use your body, mind, and wealth में in a worthwhile way फल कर in the Father's service भविष्य बनाना है। and make your future elevated. आपसे पूरा पूरा कनेक्ट, Keep a full connection with the Father. पूरा समाचार Give Him your full news. वरदान है। Blessing is, मर जीवा स्थिति द्वारा may you be full of attainments दास की and be stamped with an imperishable stamp of courage and enthusiasm प्राप्ति सम by having the stage of dying alive. एक्सप्लेनेशन, Explanation. प्राप्तियों से संपन्न होते हैं, Zeal and enthusiasm are visible in the eyes and features and in every activity of those who are full of attainments. लेकिन However, हिम्मत in order to be stamped with an imperishable stamp of courage and enthusiasm, you have to die alive to your past मर्यादाओं के and your old sanskars, nature, विकार thoughts, and actions that are against the godly मर जाओ। codes of conduct. प्रतिज्ञा Set the switch of your promise सेट करके and continue to move along प्रैक्टिकल in a practical way according प्रमाण to your promise. हिम्मत के साथ Together with courage, उल्लास भी हो, also have enthusiasm, की झलक and the sparkle दूर से of your attainment will then be visible from a distance. Slogan is, मेले व झमेले में those who are double light रहने in both a mela and a jamela, means a chaotic situation, are embodiments of dharana, inculcation. वाले इशारा Avyak signal रहने to remain constantly cheerful, अपनी नेचर be easy-natured and tolerant. सहनशील बनो, Let your every thought and every word be special. Constantly have an easy nature. Speak simple words and let your actions be easy-natured. सरलता संपन्न हर कर्म हो, Be an embodiment of easiness
Always follow the directions of the One. Have all relationships with the One. Attain everything from the One. Have the easy practice of constantly being stable with the One. Remain constantly happy and distribute the treasure of happiness. खुशी का खजाना बांटो, Spread waves of happiness over everyone. सर्व में फैलाओ, This is real service. सच्ची सेवा है। ओम Om शांति। Shanti. मम्मा का पॉइंट, Mama's point for today. मीठे बच्चे, Sweet children, ज्ञान चंद्रमा माँ की शीतलता को देख करके, बाबा ये आज का पॉइंट मम्मा का, the moon of knowledge, the mother. चंद्रमा माँ The sweet moon of knowledge, the mother. को देख करके, Seeing that coolness, क्रोध करने वाली आत्माएं भी those who have anger में शीतलता महसूस करने लग पड़ती, start experiencing चेहरे पर कभी थकावट की फीलिंग their coolness. वो सदा अथक हो, There would not be any sign of tiredness on their face. जी करके They would always say, Hanji, yes, my Lord, बैठ गए, in service. And they are seated माँ को फॉलो कर, on the heart throne of Baba. So you have to छुट्टी we have to follow Mama in this aspect. सेवा पर जा रहे हैं Taking leave from you all today, going on service to Malaysia, और थाईलैंड, Thailand. तो यहाँ तो सेवा चलती रहेगी, समाचार बीच में देते रहेंगे वहाँ का। Service will go on here. You will go on receiving news. जो विंग्सचर भट्टी है, दिव्या बहन आने वाली है, Divya Bain will be भट्टी coming. है तो उसमें तो वातावरण ऐसा भी बना के Keep on रखने का the फायदा मिलेगा। Atmosphere for the Bhatti. चक्रधारी बहन आने वाली है, Chakradhari Bain will also be तो coming. ऐसे बड़ी बड़ी बहनें बीच Senior sisters will go on प्रभा coming. दीदी तो हैं ही यहाँ पर, Prabha Bain is already तो here. सेवा तो हमेशा ही अतक की चलती है। Service will go on. तो अभी आज दोपहर को जाएंगे भोजन के बाद, After शाम lunch, की we'll be फ्लाइट leaving अहमदाबाद, evening flight from रात Ahmedabad. की फ्लाइट। अच्छा, Acha. Om Shanti. शांति। Thank you, Baba. हाँ, बाकी जो होमवर्क दिया है निवासियों को, Homework वो that has भी been given अभ्यास करना। for the Nivasis. Go on आने के practicing बाद this. थोड़ा उसकी गहराई में जाएंगे। When I come back, we'll go in deeper aspect of the homework. ओम शांति। Om Shanti. Thank you, Baba. दीदी की यात्रा के लिए हम सभी की शुभकामनाएं हैं। सभी ज्ञान सरोवर निवासी और सेवाधारियों की ढेर सारी शुभकामनाएं और याद प्यार मलेशिया और थाईलैंड वालों के लिए भी दीजिए दीदी। और स्वस्थ रहिए ट्रैवल में और जल्दी जल्दी आएंगे। कल से ट्रांसपोर्ट